Done. Start. Okay. Uh, Welcome to online spoken classes. And today we are ready to teach you how to speak English in 45 days. So today I English. English is just not a language, it is also a subject. So we have to learn, we have to speak that there are different type of topic. Actually हम चार स्पीकिंग पर यहाँ पर 2 पॉइंट अलग हैं और यहाँ पर 2 पॉइंट्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं. रीडिंग का मीन्स है यहाँ पर पढ़ना और राइटिंग का कि जब तक हम लिसन नहीं करेंगे तब तक हम स्पीकिंग नहीं कर सकते और उसके लिए चाहिए हमें वॉकैब. तो वॉकैब कैसे इंप्रूव हो सकती है, वर्ड्स कहाँ से आए जो हमारे माइंड में फीड हो और हम इंग्लिश को बोलने के लिए तैयार हो जाएं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए सबसे मेन पॉइंट जो है LSRW का वो है आपका इंग्लिश में आता है. अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा रीडिंग पर. आपको इंग्लिश यानी रीड करनी है, आपको बहुत ज़्यादा रीड करना है. जितनी ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ज़्यादा इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती जाएगी. तो रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना. फर्स्ट पॉइंट है हमारे इंग्लिश स्पोकन का, अगर इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे अटेंशन ऑन रीडिंग. At what place, at any place that you see any word, you have to read it. If you are start reading, the words will go into your mind. ओके हमारा फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमें रीडिंग पर ध्यान देना है. जहाँ भी हमें कोई शब्द दिखाई देता है वो हमें रीड करना है. सेकंड पॉइंट आता है हमारा सेकंड पॉइंट. अब आप कहोगे सर ये हाँ इंग्लिश स्पोकन का इन पॉइंटों से क्या रिलेशन है. इंग्लिश स्पोकन का इन पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि जब तक हम साइकोलॉजिकल वे से तैयार नहीं होते हैं तो वी आर नॉट रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश. सेकंड पॉइंट है यहाँ पर डिलीट. यू विल से सर व्हाट इज डिलीट, व्हाट वी हैव टू डिलीट एंड व्हाई वी हैव टू डिलीट. हमें क्या डिलीट करना पड़ता है. Actually, our memory is full, 100%. Our memory is full with other things. Other things means other parts of the things. So we have to empty. We have to empty. We have to remove some GB of our mind and we have to make a space. We have to empty. Empty means we have to make the space in our mind that English can enter. English will enter when you have a space, because you don't have a space. Your memory is full. Your mind is full with the songs that cannot be deleted easily. First of all, you have to make a space for English speaking. After that, you can learn it. Third point is that after delete you have to we have to make next point is that direct method. Okay, what is direct method? Direct method is that whatever the work we are doing, we have to use directly English. We don't have to use the translation cum grammar method. Translation, I will tell you in Hindi, translation cum grammar. हमने जो अब तक स्टडी किया है वो ये है कि हम ग्रामर को पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ रॉन्ग, दैट वे इज़ वेरी रॉन्ग. एंड द मेन thing is that for learning English we have to learn direct method. Whatever the work, जो भी हम काम करें वो हम डायरेक्टली इंग्लिश में बोलें. हो सकता है स्टार्टिंग हमारी रॉन्ग हो, लेकिन हमारा जो आने वाला टाइम होगा 10 to 15 days वो वी कैन इम्प्रूव, हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, 3 पॉइंट आई हैव क्लियर यू. फोर्थ इज दैट मैंने बोला आपको 45 दिन में सिखाना है. टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट और वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू इम्प्रूव.
तो improve will come when you point out this first reading, second is empty your mind, and third is that translation come grammar method. मतलब you have to leave this translation not. आपको किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना है. अगर आपने ट्रांसलेट किया तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. You have to understand directly. Whatever the way we are using, जो भी तरीका हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंग्लिश सुनते हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैंने एक साइकोलॉजिकल तरीके से बनाया है जिसको आपको समझना है. इनपुट और उसके बाद होता है प्रोसेस, और दैट प्रोसेस के बाद होता है आउटपुट. अब ये आप बोलोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इफ वी वांट टू स्पीक बेटर इंग्लिश, सो वी हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट. आवर माइंड इज जस्ट अ कंप्यूटर. व्हाट इफ आफ्टर दैट आउटपुट विल कम. वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट इज दैट वी टाइप, कीबोर्ड इनपुट, प्रोसेस CPU, and that output, whatever you feed in your mind, that will come out. Whatever you feed, that will come out from your mind. So fourth point is that, and fifth point is that direct. First is that reading, second is empty your mind, make a space, third is that translation come grammar method, and fourth is that input, process and output. After that you have to, fifth is that software change. Way to improve your English. Fifth is software change. We know very well that there are two things. where जो है वो है हमारा mind. तो हमें software, our inner part means software we have to change. If you think about 5 topics, 5 points, then you can improve. First is that at whatever place you find out any word of English, you have to read it. Second is that some space for English, you have to accept it. And output, it may be the process will going on from input, output and process. Now, our input, process and output. Next is software change. We have to change our mind, not we have to change our software. For speaking English, we don't have to change outer part, we have to change the inner part. Next is that now we have to learn English. So before learning English, we have to know the basics of English. Basics, it means what are the basics. Everybody has studied about the basics. So first basic, I will start from that. Here I am telling about it. English. Now, how can we get improvement? How can we increase our vocab? How can we get our confidence? How can we remove our hesitation? So that you have to, first I am telling about it, sound. When we talk about English, so sound is more important for starting. Now sound, after that second point comes, after sound, that sound becomes letters. Letters means अक्षर. तो सबसे पहले हम, अगर हम लेटर्स की बात करें तो हमारे लेटर्स होते हैं A to Z 26 और 5 कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवल्स होते हैं. तो साउंड स्टार्ट होती है हमारी वॉवल से A-E-I-O-U, और यू नो वेरी वेल A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z, और A-E-I-O-U जो हमारे वॉवल्स होते हैं. तो हमें साउंड पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. अब हम यहाँ से वर्ड्स पे चलते हैं. जो हमारे वर्ड्स, लेटर मिलकर बनते हैं वर्ड्स, और जो द ग्रुप ऑफ वर्ड, जो शब्दों का समूह होता है हम यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. वो कहलाता है सेंटेंस, यानी वाक्य, यानी एक पूरा वाक्य, एक पूरा अर्थ, एक पूरा मीनिंग जो आप बताना चाहते हो वो हमें यूज़ करना पड़ता है सेंटेंस. और सेंटेंस के बाद अगर हमें बहुत सारे सेंटेंस आते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से उस सेंटेंस के साथ हम अपनी स्पीच को जोड़ सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ डायरेक्टली सेंटेंसेस यहाँ पर हमारे, यानी कि वाक्यों, यानी कि वाक्य. हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, जिससे हमें एक फ्लो मिल जाए कि हम एक
राइट वे पर जा सकें, कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से बना सकें. वी कैन मेक सम सेंटेंस बाय आवर साइड, वी कैन मेक सम सेंटेंस बाय आवर माइंड, एंड वी कैन क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश. नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पर मैं बात करता हूँ सेंटेंस की, तो मैं इंग्लिश स्पोकन के लिए सबसे पहले प्रेफर करता हूँ मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ओके. यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बेसिक है हमारे इंग्लिश स्पोकन के. अगर कैसे हैं बेसिक, कि इम्पेरेटिव का मतलब होता है, आई विल राइट हिंदी हियर, हिंदी भी लिख देता हूं मैं यहां पर, आदेशात्मक वाक्य. आदेशात्मक वाक्य. तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आदेश. बट बिफोर गिविंग ऑर्डर वी हैव टू रिमेंबर दैट हाउ टू मेक द सेंटेंसेस. आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट. सेंटेंसेस वाक्य बता रहा था मैं आपको. तो वाक्य जो होते हैं वो होते हैं 4 टाइप ऑफ, वैसे काउंट तो 5 टाइप करते हैं लेकिन 4 टाइप होते हैं. फर्स्ट होता है असर्टिव, फर्स्ट होता है इम्परेटिव, सेकंड होता है असर्टिव, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, और फोर्थ होता है एक्सक्लामेटरी, और फिफ्थ अगर हम काउंट करें तो वो होता है ऑप्टेटिव. तो असर्टिव जो होता है स्वीकारात्मक एक स्टेटमेंट होता है, दैट इज गिवन बाय एनीबॉडीज, दैट इज सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो, सिंपल जो सरल वाक्य होता है. उसके बाद होता है हमारा इम्परेटिव. इम्परेटिव होता है आदेशात्मक, जिसमें हम आदेश देते हैं. और उसके बाद होता है हमारा एक्सक्लामेटरी, जिसमें हम विस्मय बोधक, विस्मय से भरी हुई बातें करते हैं. और उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से आते हैं. और इसके बाद हमारा ऑप्टेटिव अगर काउंट करते हैं तो हम वो स्टार्ट करते हैं मे से ब्लेसिंग देने के लिए या किसी को कर्ज देने के लिए. अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इम्परेटिव सेंटेंसेस से, क्योंकि हम एक एक को क्लियर करेंगे तब जाके हमारे माइंड में कुछ सेट हो. सेंटेंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. मैंने बताया इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य. अगर हम इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से काउंट करते हैं इसको या बताते हैं, तो फर्स्ट जो होता है हमारा, फर्स्ट होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव होता है. अब मैंने इसको क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम सबसे पहले जो भी होता है आदेश देना सीखते हैं. अब उन आदेशात्मक वाक्यों में क्या होता है, सबके अंत में ओ आता है. ओ, जो भी आदेश देते हैं उनमें ओ आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है. मैंने बोला आप जाओ, आप जाओ. नाउ वी डोंट हैव टू यूज यू, हमें यू यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली द पर्सन इज लिसनिंग, क्योंकि वो सुन रहा है. तो हमें केवल यूज करना है गो, जाओ. तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वो होता है गो, जाओ. अब कहाँ जाओ, बाहर जाओ, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया. तो गो आउटसाइड, बाहर जाओ. इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. यहाँ आओ, कम हियर. पानी लाओ, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर. उधर जाओ, गो देयर. मेरी तरफ देखो, लुक एट मी. उधर देखो, लुक देयर. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद होनी चाहिए. जैसे उसे पढ़ाओ, टीच हिम. और यहाँ आओ, कम हियर. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं वो आदेशात्मक होते हैं. आदेशात्मक वाक्य हमें सीखने ही पड़ेंगे, इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है. दैट विदाउट इट वी आर नॉट एबल टू यूज इंग्लिश sentence, or we are not able to use English fluency. So first form. Now second is that we have to use with don't. don't का मतलब होता है, यहाँ पर मैं बात बता दूँ आपको, ये don't के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है. तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमें मना करना है किसी काम के लिए, तो डोंट है वही इम्परेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, लेकिन हमें यूज़ करना है इसको, वी हैव टू यूज़ इट. जैसे हमें किसी कोई भी काम के लिए मना करना है तो डोंट. मत जाओ, डोंट गो. पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर. या चाय मत लो, डोंट टेक टी. या बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस. और बुरा मत मानो, डोंट माइंड.
या डोंट लूज होप, आप आशा मत हारो या हिम्मत मत हारो, डोंट लूज होप। डोंट गो आउट बेयर फुटेड, नंगे पाँव बाहर मत जाओ। डोंट शर्क वर्क, काम से जी मत चुराओ। डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। तो देर आर डोंट, अगर हम यूज़ कर रहे हैं डोंट, तो डोंट के लिए हम मना करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, दैट वी हैव टू यूज़ इट प्रैक्टिकली। डोंट don't pluck don't pluck the flower. Don't pluck the flower means फूल मत तोड़ो। Don't pluck the flowers. Okay, there are two type of that. We have to learn first form of the verb and our sentence will start. Look at me, come here, go there, sit down, stand up. There are so many verbs, we have to use it for first form. Now next is that let. We have to start our English with these type of sentence. First I have told you about that verb first form, only first form. No, you don't have to use any subject, any type of helping verb, only you have to use verb first form and your English will start. Okay, mostly I have heard about that the people who don't know English, they use it. I am washing, wash the clothes, wash your hand. So that the person who start, he will learn. Mistake will be by yourself, but practice you have to do it. Now third is that let. Now do you ask about that, what is this let? Now let is used for two purpose. First is that permission. First we have to use permission, and second we have to use for suggestion. Suggestion and permission. Look at here, I have written here, you can use let. Okay, first form you can use come here, go there, and don't you use don't talk nonsense, don't talk to me, don't look at me, don't fight. Okay, there are so many sentences. Now let. Now I will tell about let. Third is that. I will explain here with the matter let. Here. Now let is used for permission. We have to permission, and here I have written suggestion. देखो permission का मतलब होता है अनुमति, यानी कि हम किसी से अनुमति लें। 1 minute, ये वर्ड हम किसी से अनुमति लें। और सजेशन का मतलब होता है दैट इज सुझाव, हम किसी को सुझाव दें, तो हम लेट का यूज़ करते हैं। अब हम हमारी लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं, हाउ डू वी यूज़ इन आवर लैंग्वेज। आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू नो बिफोर दैट नाउन्स प्रोनाउन, हमें इससे पहले प्रोनाउन जानने पड़ेंगे। अब प्रोनाउन जो है हमारे उसके अंदर आता है एक ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है हमारा मी, ठीक है। मी का अर्थ है मुझे, और यहाँ पर आता है हिम, हिम, और यहाँ पर आता है दैम। ओके, मी, हिम, दैम, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं पहले। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं लेट के साथ। इनका यूज़ करते हैं किसके साथ, लेट के साथ यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं बता रहा हूँ, देखो। मी, हिम और दैम। तो मी का अर्थ है यहाँ पर मुझे। अब आपको सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, तो मुझे, हिम उससे, और दैम यानी उनको। ओके, हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। देखो कैसे तैयार होगा, परमिशन लेनी है, लेट का प्रयोग करना है, उसके साथ इन वर्ड्स को हमें ऐड करना है। जैसे मुझे जाने दो, आई टेक परमिशन फ्रॉम यू, आई एम जस्ट टेकिंग परमिशन फ्रॉम यू दैट मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो मैं लेट का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखो, लेट मी, और फिर मैंने परमिशन लिया आपसे, लेट मी गो।
अब यहाँ पर जो हिंदी मीन्स हुआ उसका अर्थ हुआ मुझे जाने दो। ओके, अब आप कोई भी परमिशन ले सकते हैं, जैसे लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी कुक, मुझे पकाने दो। लेट मी शो यू, मुझे आपको ये दिखाने दो। और अगर हम यहाँ पर हिम के साथ यूज़ करते हैं तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम ईट, उसे खाने दो। और लेट हिम थिंक, उसे सोचने दो। और यहाँ पर अगर दैम का यूज़ करते हैं तो प्लूरल होता है, बहुत सारे लोग। लेट दैम रिलैक्स, लेट दैम थिंक, लेट दैम स्टार्ट, लेट दैम टॉक, लेट दैम डू व्हाट दे वांट टू डू, करने दो जो करना है, लेट दैम डू। तो यहाँ पर दैम यहाँ पर अनुमति के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सजेशन, सुझाव। हम किसी को सुझाव देते हैं, हम किसी को ऑफर करते हैं, तब हम लेटस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लेटस का यूज़ कैसे करेंगे, हाउ वी यूज़ इट। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले लेट अस। इसका जो एब्रीविएशन होता है वो होता है लेट्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है लेट्स। लेट्स गो, चलो चलें, लेट्स। अब यहाँ पर सुझाव के लिए केवल अस का यूज़ ही किया जाता है और किसी का यूज़ हम नहीं करते हैं। लेट अस गो। अब यहाँ पर what will be the Hindi means of that, you have to understand because our mind is connected with Hindi. So let us go, चलो, let us go, चलो चलें। Let us go, let's go, let's come, चलो आओ। Let's drive, let's have a picnic, या let's have a drive, या let's have a cold drink। तो लेट्स हैव का यूज़ किया जाता है इसके साथ में, और यहाँ पर हमने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म लेट अस गो, यानी कि चलो चले। लेट अस हैव डांस टुगेदर, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, लेट्स हैव लंच टुगेदर। तो दैट वी हैव टू यूज़ इट लेट अस। आई विल राइट वन मोर सेंटेंस हियर। let's have breakfast. Let's have breakfast. Let's have breakfast together. You have to pay attention also on the accent. Okay. So let's have breakfast together. Let's have breakfast together. Let's have breakfast together. And that, let me go. Let them think. Let them eat. Let them speak. Let them listen. Let them. So that we can use imperative sentence first of all in our language. Okay, I was telling you, मैं आपको बता रहा था कि हमारे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट था फर्स्ट था हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किसी को भी बोलना है तुम जाओ, बस ये बोलना है गो। तुम आओ, कम। खाओ, ईट। बात करो, टॉक। Don't use any helping verb, don't use any tense, and just you can start your wordings. Okay, I have told you about to pay attention on reading. Now fourth point of imperative sentence, any fourth type of sentence I was telling you. Fourth type is that please, kindly, please, kindly. Okay, please and kindly. ओके, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, आप जानते हैं, और काइंडली का मतलब होता है कृपा करके, दया करके, वही बात है कृपया। तो प्लीज़ जो एक गुड मैनर्स वर्ड होता है इन इंग्लिश, प्लीज़ लुक एट मी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ look it here. Now please and kindly help me, kindly give them whatever they want, kindly grant me leave for 2 days. Please or kindly both are used for as a request. When we are doing request with the person, so we use please. Please try to understand.
ओके, नाउ वी नो अबाउट दैट 4 टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस. मैंने आपको बताया 4 टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस है. अब उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें. इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो फर्स्ट है हमारा थ्योरी और सेकंड है दैट इज प्रैक्टिकल. ओके, you know the difference between practical and theory, I think. आपको पता है प्रैक्टिकल क्या होता है और थ्योरी क्या होती है. सैद्धांतिक और व्यवहारिक. तो मैं यहाँ पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड, जो अब तक हमने पढ़ाई की आफ्टर दैट इन स्कूल और इन कॉलेज और इन एकेडमिक, दैट वाज द थ्योरी. ओके, and now we want to be fluent in English and we want to show ourselves, we want to express by our sound, so that is practical. A person who completes his MBBS after 5 years of completing the college, he cannot operate in the operation theater because his hands start shivering because he has not done the practical. So English speaking is just a practical, not the theory. By theoretical way we cannot learn, we can learn by the psychological way. Now theory and practical I am telling about it. Yeah, practical means we have to use this in our practical life. Practical life. So please or kindly, you know about it, I have not told you about the sentence. Please help me. Please help me. Please give me your address. Give me your address. Now I am telling about here that if you want to implement, it means we have to bring the up implementation. हमें अब प्रयोग चाहिए इंग्लिश का. We don't have to need the theory. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने बताया आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस बताए थे 5 प्रकार के. अब 5 प्रकार के सेंटेंस में से उसमें सबसे पहले जो है हमें इंपरेटिव सेंटेंस को अप्लाई करना पड़ता है प्रैक्टिकल लैंग्वेज में. अब अप्लाई कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पहले तो क्लियर विजन करना है. क्लियर विजन क्या है, क्लियर विजन ये है कि नोबडी इज परफेक्ट इन इंग्लिश. नोबडी कैन शो दैट यू आर डूइंग मिस्टेक पर्टिकुलरली, but practice makes the man perfect and well begin is half done. I am writing here well begin is half done. Okay, it is a saying in English that well begin is half done means अच्छी शुरुआत और आधा काम हो गया. अच्छी शुरुआत अच्छी शुरुआत और आधा काम हमारा हो गया. तो अच्छी शुरुआत कैसे होगी हमारी, देखो, अच्छी शुरुआत और आधा काम हो गया, आधा कार्य या काम हो गया. ओके, we have to say this sentence that well begin is half done. If you are doing your work from starting and that you are interested in English speaking, so well begin is half done. Well begin is half done. अच्छी शुरुआत, आधा कार्य हमारा क्या है, हो गया. हाँ, वी शैल टॉक अबाउट दैट कि हम अब इंग्लिश को कनेक्ट कैसे करें, जोड़े कैसे, कि हम इंग्लिश के कुछ सेंटेंस बोलें जिससे हमारा जुड़ाव हो जाए. जुड़ाव मतलब जब तक हमारा जुड़ाव नहीं होगा तो वी कैन नॉट स्पीक एंड वी कैन नॉट लर्न. तो जुड़ाव कैसे होगा, जुड़ाव के लिए मैं कुछ एक बेसिक सेंटेंस बता रहा हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. और डेली लाइफ में यूज़ करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि येस दैट इज़ द राइट वे, दैट इज़ द राइट थिंग दैट वी आर डूइंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश. मिस्टेक्स
are necessary for speaking English, because we are not native speaker, we don't have a tongue like that, but we can make a practice. So I will tell you, well begin is half done. After that, now we have to start with the imperative sentence and first form of the verb. So here is given daily routine sentences. Now you will ask, sir, what is the use of daily routine sentence and why we have to use daily routine sentence? Actually, first place that we can speak English, that is our home, and at our home we have to make a practice, because outside if anybody would ask you, you learned English, okay, speak some sentence, but that is not possible. But when you speak some daily routine sentence, so that will be beneficial for you. And without starting the daily routine sentence, we are not make the connection. Connectivity will be of the words with the daily routine sentences. So daily routine sentences, it means we can call it imperative sentences. We have studied today, जो आज हमने पढ़े थे वही imperative sentence को हमें daily routine में use करना है. Imperative sentences. Okay, we shall talk about that first. First is that, first you think that how can that we are able to speak? I have told you before it that 5 points you have to remember. You don't have to translate. Don't translate. If you will translate, so you will never be able to speak a single word. Don't translate. Try to understand directly. Change your software and that make yourself comfortable in this environment. Now first point I am writing here, first sentence, that we don't have to learn complete English. We have to starting point. When we have a starting point, then our English can go on the right path. So first is that I have written lot of time, but I am writing again. Yes, sit down. Yes, you say, sir, everybody knows and we also use it, but basic is basic. First step of learning English, I have told you about it, imperative sentence. And imperative sentence, that first is that sit down. It may be sit down, and there are so many sentences. You know very well. You say, sir, what you are teaching us, that we know very well, but actually you don't use this. Sit down. Okay, sit down. We know very well that at what place we use it, but now why I have written this sentence, because it will start your English. Here we have to think about this. Sit down. Okay, now every word has a story. Story. Now you know very well, कहानी. अब हमें कहानी कहनी है कि हमें sit down बोलना है, तो कहाँ बोलना है, हमें एक उदाहरण बताना है. We have to tell the example of that sit down. We want to say sit down. First of all, your mind does not work in English. आपका mind English में काम नहीं करता है, तो अब हमें mind को English में काम करवाना है कि हमें उससे बोलना है कि आपको ये सोचना है कि स्टोरी कहाँ हम बैठ जाओ बोल सकते हैं. स्टोरी नहीं हो तो एक एग्जाम्पल हो सकता है या कोई इंसिडेंट हो सकता है. यहाँ पर हम डेली लाइफ में, अब यहाँ से स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है हमारा प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में चलना है हमें, पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है. वी डोंट हैव टू गो इनटू द फ्यूचर, वी डोंट हैव टू गो इन द पास्ट. we shall work in only present. क्योंकि जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनमें अगर हम इंग्लिश बोलना शुरू करें तो हमारी इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है. अब हमारा कैसे बैठ जाओ सिट डाउन. हमें इसके पीछे स्टोरी नहीं बोल सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वी कैन मेक इन
एग्जाम्पल उदाहरण बना सकते हैं, या फिर हम कोई इंसिडेंट बना सकते हैं, यहाँ पर हम कोई इवेंट बना सकते हैं, लेकिन उस कहानी के अंदर या उस एग्जाम्पल के अंदर, उस घटना के अंदर बैठ जाओ आना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि थॉट वी हैव टू क्रिएट इट, जो विचार है हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर विचार क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारी इंग्लिश, हम एक भी शब्द को हम अच्छी तरह नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, सिट डाउन। नाउ आई विल टेल यू। वंस आई वेंट फॉर an interview and I saw there were many interviewees like sitting, and everybody is waiting that when their turn will come, when their turn will come, and that I was also waiting. The questions which were asked from us, questions were very different. No person was able to give the answer. Now obviously I went there and I gave the answer. First question was, I didn't give the proper answer, but I was accurate at that place. The question was asked in the interview. Question पूछा गया इंटरव्यू में कि tell me, 1 minute, tell me that जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मेक इट इंग्लिश। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। दैट वॉज द क्वेश्चन। नाउ आई टोल्ड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दैट द क्लाउड्स मेक रेन, क्लाउड्स मेक साउंड बट डज नॉट रेन, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। एंड दैट एवरी प्रोवर्ब हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग। तो इंग्लिश में हमें स्टोरी एग्जाम्पल कहते समय कई वर्ड ऐसे होते हैं जो हम डिफरेंट यूज में या डिफरेंट अर्थ में लेते हैं, एक एक स्पेलिंग के डिफरेंट डिफरेंट अर्थ होते हैं। तो वहाँ पर जो राइट आंसर था वो ये था, दे गॉट सिलेक्शन बिकॉज दे डोंट हैव अ ऑप्शन, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू कैंसिल बिकॉज नोबडी वाज क्वालिफाइड फॉर दैट। ओके, नाउ I want to tell you about it. The sentence was जो गरजते हैं बरसते नहीं है, उसका राइट जो इंग्लिश था वो था barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite. Okay. Now we have to make the story of that, like sit down, that I have told you in my story. जैसे मैंने आपको अपनी कहानी बताया, that they told me to sit down and they started asking question from me. अच्छा, हम इतनी लॉन्ग स्टोरी नहीं बना सकते स्टार्टिंग में, तो हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरी कैसे बनेगी? सिट डाउन। ओके। Suddenly I heard the sound on my door. Somebody was knocking loudly. I asked that who is there. I asked about who is. Then he said, it's me. When I went there, I opened the door. I saw that was my uncle. I say, uncle, come in, please, welcome. And after that, I say to my uncle, please sit down. Please sit down. Now connectivity of the thought we have to do it. मतलब जोड़ना है हमें, किसी स्टोरी को पहले हिंदी में से बनाना है, शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट नहीं बनती बड़ी बनाना है, बड़ी नहीं बनती उससे एक लाइन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। वन लाइन वी कैन यूज, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, अंकल केम, प्लीज सिट डाउन। बस दो सेंटेंस भी, लेकिन सेंटेंस को कनेक्ट करना आना चाहिए। देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिट डाउन के बाद, मैंने बताया स्टोरी, एग्जाम्पल, इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, तो सिट डाउन हम यूज़ कर सकते हैं, बट practically use it, not theoretically. If I am doing reading, अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो मैं रीडिंग करूँगा डेली रूटीन सेंटेंसेस, imperative sentence, story, example, incident, barking dog, seldom bite, present or sit down. I don't have to reading. If I'll start reading, then we are reading तो करनी है, लेकिन ऐसे reading नहीं करनी है कि there is no connectivity with your body language. Like that, daily routine sentences, imperative sentences, story, examples, incident,
present, barking dog seldom bite. Okay, come to that here, sit down. Now, I'm not saying that you have to use only sit down. I'm saying that there are different ways of saying to sit down. I will tell you some. That first sit down, second we can say please make yourself comfortable. Please make yourself comfortable. Please make yourself comfortable. Okay, please sit down. We can say second is that. Second we can use it. Please make yourself comfortable. Okay, third we also use. We can say for making the person sit in front of us. So we can use another that. If you can't say sit down, so you can say please make yourself comfortable. Please be seated. Please be seated. Okay, now next. Sit down, please make yourself comfortable, please be seated. If we are not able to speak this sentence in our practical language, then we can say if we have a chair for making sit to the guest, so we can say that please pull the chair. Okay, please pull the chair. If we are not able to speak sit down, please make yourself comfortable, please be seated, please pull the chair, then we can use have a seat. Please sit down, please make yourself comfortable, please be seated, please pull the chair, have a seat. Okay, that we have to use it in our practical language. Practical means the single word we use it, and we have to use it in practically. Theoretically not. Theoretically can change for our speaking, because there is only one place for us keeping ourselves at one thing. Like in English, our mind will work in English. Okay. So daily routine sentence that we use it. After that, I will tell you about it. Second, now I'm not saying that you have to speak in a one day complete English, but practice you have to do slow and slow for learning and speaking. Second sentence you know very well, I don't tell, but this is the stand up. Oh, I am writing pronunciation. Okay. Stand up means खड़े हो जाओ. Stand up. Yes, stand up. Feel the sentence. Make a story. Make an incident. And also think about that at what place we can use this stand up. We have heard it at any place or not. If we have heard it, then we can use it. Stand up. I said stand up. Okay. Now I will tell you in a small way, in a simple topic like that. Stand up. We have to use it in a practical way. Stand up. Mostly we know the words, we know the sentence, but we don't use it practically. So we have to use it practically. Now, if I have a question in my mind, so for that question, I will ask from the student. And students, where are the students? Students are sitting in front of me. And when students are sitting in front of me, so I will ask them. And I say first of all, yes, stand up. Stand up, Mr. Ramesh. Stand up, Mr. Sunil. Stand up.
So then I have to use this word in practically. Stand up. Why are you sitting? Stand up. And mostly when we travel and somebody sit on our seat and we are saying to them, hey, stand up, this is my seat, I have reservation. If we have reserved, then before reservation we are not able to say that reserve it. So we can say, this is my seat, please stand up, and you can go at another seat also because I want to sit here. Okay, so that practically we have to use it. Practically simple, we have to think about it. पहले हमें सोचना है कि उस सेंटेंस को हम कहाँ यूज करते हैं प्रैक्टिकली. सुनते सब हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मुझे, टेल मी स्टैंड अप कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे सर कि जब हमें किसी को खड़ा करना हो. लेकिन अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल बनाना है. वी हैव टू मेक ए स्टोरी ऑन दैट स्टैंड अप. Simplest way is that join the sentence, connect that and try to understand, and we have to say only using practically. Without practically we are not able to speak. We can say stand up, this is my seat. Oh, stand up, please stand up. There are two ways of speaking. First is that we are saying stand up and say, please stand up, please. There are different way of speaking, like stand up please. So now next sentence is that do your work. Do your work. Do your work. Okay, I will ask from you that at what place we can use this sentence. Do your work. Now एक्चुअली यू हैव टू लर्न इंग्लिश. आपको इंग्लिश सीखनी है, लेकिन अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आपके माइंड को निर्देश देना पड़ेगा कि अब हमें कहीं पे बोलना है अपना काम करो. अपना काम करो हिंदी में हमने बोल दिया विद फीलिंग और इमोशंस के साथ. हमें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और उसी जगह बोलना है जहाँ पर हम हिंदी में बोलने वाले थे. तो इसके पीछे का हमें एक, सबसे पहले कोई भी इंग्लिश का वर्ड, व्हेन वी यूज एनी इंग्लिश वर्ड, सो वी हैव टू यूज इट व्हाई. व्हाई मतलब होता है क्यों. ओके, व्हाई वी आर लर्निंग इंग्लिश. व्हाई वी आर ट्राइंग टू गेट द क्लास. व्हाई. सो हियर आई एम टेलिंग अबाउट इट. 1 minute. Why? Okay, क्यों. If you will find the answer of क्यों मतलब because, क्योंकि, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर क्यों मतलब हमें किसी से बोलना है do your work. Mister, do your work. Now, do your work, he will do his work on time, but if a person who is not paying attention on his work and he is interfering, he is coming into that, he is becoming the obstacle in front of the person, then the other person does not want any interfere from the other person, then he can use it, do your work. Do your work. What are you doing? Do your work. What is your work? Your work is to listen, read, write and speak. Okay, so here is that do your work. And now in another sentence, how can we use it? In another sentence we can say mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Here is the same meaning of that. अपना काम करो या अपने काम पर ध्यान दो. आपका काम क्या है? अपने काम पर, अपने काम पर ध्यान दो. ध्यान दो. You have to
माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो, या डू योर वर्क. We have to go into the feeling of the sentence that we have to use it. Do your work. Now where we can say, at what situation we can say, पहले आप उसको हिंदी में सोचो आप कि हमें किसी से बोलना है अपना काम करो या अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो. तो हम मोस्टली हिंदी में तो बोल लेते हैं, वी स्पीक हिंदी sentences very easy way. We say that the person who is not doing his work, we can say do your work, mind your own business. Now we have to know about that, how can we convert it, हम कैसे बदलें हिंदी से इंग्लिश में. अब एक सेंटेंस पता चल रहा है हमें, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो. तो we have to convert in our thought. If psychological way we have to learn it, then we have to say we want to use this sentence, hey mister, mind your own business, what you doing. Okay, now next I will tell you about it. Sit properly. Sit properly. Okay, sit properly. Sit properly. Now we know very well that Hindi means it that Hindi means is that Hindi means is that sit properly. Okay, now we have to use it practically. At what place we can say about it? Sit properly. Okay, so we are not sitting properly. Yeah, it may be we went into any restaurant, it may be we are in the party and we are at in the meeting, and we put our, when we put our leg like that, we put our leg on the somebody's, so that at that time we can say, yeah mister, sit properly, because you are not sitting properly, so that people want that you have to sit properly. That we have to find out where we can use it in a practical way. Sit properly. Are you sitting properly in the class? I'm not watching you because I'm online, but I'm asking question from you, that are you sitting properly? Are you sitting properly? So we can say sit properly. There are now we don't have to think about that sit properly is complete sentence. Sit properly, we can join it. We can join another, that please sit down, sit here, sit on the table, sit on the chair. There are different type of connectivities of the words that we can join it, we can think it. Now we have to work on limited, not unlimited words we have to find out for speaking. We have to say sit properly. Okay, now next sentence is that sit properly. After that I say wait outside. Wait outside. Wait outside. Now you hear by my mouth wait outside, you understand wait outside. Hindi I have written here. Now you can read it properly and that think about wait outside. Now you have to enter. Enter means enter in English word. Enter मतलब प्रवेश कीजिए in English word. English word. अब इंग्लिश के संसार में प्रवेश कर चुके हैं, तो इंग्लिश वर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश वर्ड, नॉट वर्ल्ड, इंग्लिश वर्ल्ड. तो इंग्लिश वर्ल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इंग्लिश वर्ल्ड. ओके, एंटर इन इंग्लिश वर्ड के लिए हमें इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा. अब इंग्लिश पे ध्यान देने के लिए हमें हिंदी को थोड़ा सा
यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं वी कैन, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश के बिना काम नहीं चल सकता। तो पहले तो आप अपनी झिझक हिंदी में छोड़िए, पहले आप क्लियरली हिंदी में बात करना सीखिए, फिर उसके बाद इंग्लिश में बात कर सकते हैं। देखो, वेट आउटसाइड, अपनी झिझक को छोड़ना है। वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। अरे मैंने इंतजार क्यों किया, या मैं इंतजार क्यों करूं, या किस लिए इस सेंटेंस का यूज किया गया, जब तक हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। डेप्थ का मतलब जब तक हम उसको डेप्थ नहीं सीखेंगे तब तक हम वी कांट वेट आउटसाइड, हम बाहर भी इंतजार नहीं कर सकते। सिंपल लॉजिक, सिंपल सेंटेंस, माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर देना है, स्ट्रेस देना है कि हमें किसी से बोलना है वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। अरे हम क्यों बोलेंगे, बिकॉज one person call me, one person call me, and after calling he say that I want to meet you at this time, at this time, at this time I have an urgent work from you, so please make a meeting with you. So I say I'm sorry at this time, really I'm sorry for that, and I can say wait outside for the class will complete. Okay, wait outside. So go into the feeling. Without feeling the words would not come out. Practice, अरे प्रैक्टिस तो करनी है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होने वाला, लेकिन थिंकिंग, सोचना भी है। जैसे बाहर इंतजार करो, मैं क्यों बाहर इंतजार करूं, कब करूं, किस लिए करूं, क्यों करना है मुझे अब बाहर इंतजार, उस थॉट को लेके आइए प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरेटिकल लाइफ में। मुझे किसी से बोलना है बाहर इंतजार करो, तो इसका मतलब मैं बहुत बिजी हूं, आई एम वेरी बिजी, आई एम नॉट एबल टू टॉक विद यू, मैं आपसे भी बात नहीं कर सकता, तो प्लीज वेट आउटसाइड, कृपया बाहर इंतजार कीजिए। थॉट इज कनेक्टिंग विद माई माइंड, मतलब वो थॉट जो है मेरे माइंड के साथ कनेक्ट कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ, आई एम सेइंग। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, तो प्रैक्टिकली कैसे होगा, आई गॉट ए कॉल एंड माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट आई वुड लाइक टू मीट यू, सो आई से नो प्लीज वेट आउटसाइड। I have connected 2-3 sentences together. So how it is possible that I connected the sentence together? Because I have a clear vision about this. So first of all, you have to find out that any word we want to use it practically, so we have to learn the use of practical of that. And in theory, we can read it, we can listen it, we can write it, but practically we cannot use in our daily life. डेली रूटीन मतलब डेली हमें प्रैक्टिकल में लेके आना है। ओके, वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। अब हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है। अगर हम ऐसे बोलेंगे स्टैंड अप, दिस इज नॉट अ speaking that stand up, do your work, mind your own business, sit properly, wait outside, that we have to use it practically. Okay, next I will tell you about it. Fifth, these sentence, ये सेंटेंस खाली लिखने के लिए नहीं है, एट यू हैव टू यूज इट प्रैक्टिकली, यू हैव टू रीड इट मोर देन 7 टाइम्स, 7 बार से ज़्यादा इसको पढ़ना है, और दे विल फीड एंड दे विल स्टार्ट कनेक्टिविटी विद योर माइंड। ओके, नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज दैट स्टॉप। इम्परेटिव सेंटेंस पर ही चल रहे हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ नहीं करना है। स्टॉप यानी रोको, और स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। र का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए यहां पर स्टॉप द कार, कार रोको, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। Practically we want to speak, not we want to write, we don't want to read, we don't want to, but we have to listen it. Without listening you are not make the sentence. Now sentence is that stop the car, stop the car, stop your thought, stop the horn, stop the bike, stop the bus, stop the auto. Like that we want to stop the working, we want the works may be stopped by you. So now stop the car, I have told you, first thing is that we have to go in the story, and second point is that we have to go into the life, and life is
present. Life is present. Life is present. Present. Yes, 1 minute. Life is present. Present means present tense, present time, present. We have to connect with the present. Because we are alive today, tomorrow there is no guarantee that we will alive tomorrow. So today we are time, to then we have to speak in English. Okay. So I'm saying connect with the present time. Now you have visited any place in future or in the past. You have used this sentence practically at any place. Stop it. We use it. Stop it. Stop it. Stop him. Okay. Stop talking nonsense. Sometimes we use also. Now stop the car. I will tell you the incident behind it. I have told you about the story, life, present. I have connect the life, present and story with myself. So that's class go. Okay. Stop the car. No. Don't stop the car. You don't have to stop the car. We have to say somebody that stop the car. Now I will tell you, there was a person who was traveling in the car, and he was, by chance we can say that he was traveling with me. So he wanted to stop the car. So I asked him that why do you want to stop the car, because driver was driving. So he told me that you have to stop the car. I said why? He said that I would like to eat some sweets. What a weird wish, what is the unique wish, what is the strange wish that he was traveling in the car with me, and suddenly that thought arising in the mind that I would like to have the ice cream, I would like to have some sweets. Then I say okay, stop the car. But that was very late time, so I tried to stop him a lot of time, but what we have to do, we have to stop the car. Okay, and now another example. Don't mind, please don't take tension about this. So we can say stop the car. We have to say practically stop the car. Now, if you don't have RC, you know RC, the bike document, RC. It may be pollution. It may be driving license. Then anybody can stop you when there is a checking is going on. Stop the car, stop the bike, stop the bus, whatever that, stop it. Everybody knows about it. Okay, stop the car. You understand very well. We have to make the story behind that. Stop it. Stop it. What you're doing, yeah? Stop it. Stop. Now we'll go into the feeling, then we will learn English. Every word has a feeling, every word has a meaning of that, so that we can use it. Okay. Now next I will tell you also. 1 minute. 1 minute. You have to wait for me like that. Next is we have to use speak slowly. Speak slowly. Speak slowly. Walk slowly. Okay. Speak slowly. I have told you that go into the feeling of that feeling. We have to use it practically. We have to say somebody speak slowly, because your sound is at a very high pitch. I am not able to get the real mean of wordings that you want to say. Speak slowly. Some people speak very fast, too much fast, that we are not able to the mean of word what they want to say, and their voice is like a crow. You know very well crow. So their voice is like a raucous. Okay, and their voice is like
different world. You know different world? Their voice is like a from different world. So we are not able to understand. So we can say, please, you have to speak slowly. You have to speak slowly, not speak loudly. Now, I have told you about that you have to given the topic and now you have to make a story. Yes. I'll come back in हिंदी. मैं हिंदी में आता हूँ आपको समझाने के लिए. देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीक स्लोली, धीरे बोलो. स्पीक स्लोली, आप भी समझ गए, धीरे बोलो. और हमें बोलना भी धीरे चाहिए. कभी कभी हम तेज भी बोल जाते हैं क्योंकि बहुत गुस्सा आता है. वी फाइंड टू मच एंगर इन आवर बॉडी एंड वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल बिकॉज आवर माइंड इज वर्किंग एट अनदर प्लेस एंड समबडी डिस्टर्ब अस. ओके, तो स्पीक स्लोली, मैंने यहाँ पर लिखा स्टोरी. अब यहाँ पर स्टोरी लिखा है तो इसका मतलब इसके पीछे की हमें स्टोरी चाहिए. तो कहाँ बोल सकते हैं हम स्पीक स्लोली, धीरे बोलो? When their boss is giving instruction and giving order about the target project, and that boss say when the two employees are talking with each other, because there is habit when some people sit together, so they start talking. So another employee who is very sincere and who is very intelligent and he is dedicated to his work, so he'll say, please speak slowly. Boss is listening. Speak slowly. Your voice is listened by somebody. Your voice is audible by somebody. Okay. Now next sentence is that. Now today I am telling about that 40 to 50 sentences we have to learn for spoken English. After that we can go at another topic because these are very very important sentences for connecting your mind with English. Okay, I will tell you a spelling that is very modern in English. It is used. So here is that jab, and here is used jab, and here is used jab. What is the means of jab? Anybody know? Okay. Anybody know about that jab? Okay. Jab is, there are three meaning of jab is that jab, injection. Okay. And jab means now a word has three spellings. Three means spelling same, but our names like use it. So jab. Now jab means push somebody. Jab means COVID jabs. And that jab, it may be no that like a dog is barking. That is not saying about it. That is any spear or any sword is jab. Class continue? It's over? Okay. Okay. Tomorrow we take class at same time 11 to 12. So you have to wait it. आप ये ना सोचिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती. अरे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है. अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश कहाँ से आएगी? एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे और कनेक्ट रहोगे, जुड़ते रहोगे तो आपकी इंग्लिश में कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है. ठीक है, टिल देन, टुमारो, बाय.